Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes, as you can see on the screen, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है allotment of shares. Yeah, that's it. This is the only topic I'm going to discuss with you in detail, in depth a bit. क्योंकि we by rules and regulations we are aware कि allotment of shares क्या है. So we will just say giving shares to the people. तो ये वाली जो चीजें हैं ये हमारे अंडरस्टैंडिंग में है, राइट. बट स्टूडेंट्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का भी एक एक्सप्लेनेशन है. Okay, there is a systematic way of explaining what do you mean by allotment of shares. So when allotment of shares पूछा जाता है, हम क्या करते हैं, we will just put a statement saying allotment means company gives the shares to the public and that's it, that is allotment of shares. और क्या लिखोगे आप? So that's why it is very important that meaning भी हम थोड़ा सा in depth पढ़े. Okay, so that tomorrow when you are writing anything about allotment, you are very clear कि allotment आखिर है क्या. Okay, so because of that reason I am not just going fast with the allotment of shares, because I want to cover the statutory provisions and general principles in each video, so आपको एक detailed understanding मिले. Yes, we are studying because we have to get the knowledge is what is very important, students, because yes, we answer in the exams and we want good marks, that is there, that is the primary thing, but knowledge also has its role to play, है ना. Tomorrow if somebody asks you about allotment of shares, you should be in the position to just tell them at least few explanations about yes, these are the allotment of shares and this is how it happens. ठीक है. So उसके लिए मैंने I just thought that I will discuss allotment of shares with you. This is one thing. And secondly, yes, as per the 25% reduction of the syllabus, procedure of allotment nahi hai. We have not reached there yet. But let's see, because I feel that you should know about these things. So that is the main purpose, that why we are discussing all the topics. We are not skipping any thing, because this is just for the academic year. जो उन्होंने रिडक्शन किया है, नेक्स्ट ईयर से फिर ये सारी चीजें अप्लाई हो जाएंगी. सो बिकॉज ऑफ दैट आई थॉट लाइक वी विल स्टार्ट विथ प्रॉपर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का जो मीनिंग है मैं उन आपके साथ डिस्कस करूंगी, सो दैट विल गेट द क्लैरिटी ऑफ द कंसेप्ट. ओके, सो आई होप दिस अलॉटमेंट ऑफ शेयर का जो भी डिस्कशन होगा, दिस विल रिमेन इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी ऑल्सो. सो ऑन दैट गुड नोट चिल्ड्रन, लेट्स बिगिन. Students, allotment of shares क्या है? Okay, I'll just read out for you. It's already written. When a company gives share to an applicant based on the application submitted, okay, it is called as allotment of shares. Definitely. Okay, so when a company gives its shares to the applicant, जिन्होंने apply किया है, जिन्होंने application submit किया है कि हाँ भाई मुझको shares चाहिए, तो जब कंपनी वो शेयर्स जिन्होंने एप्लीकेशन सबमिट किया है उनको शेयर दे देती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कहते हैं. नाउ दिस इज क्लियर टू यू, इजंट इट. अब वहां पे बहुत सारे एक डेफिनेशंस दिए गए हैं और इम्पोर्टेंट पीपल हु प्ले द रोल वो भी दिया गया है. लेट्स सी हु आर दोज इम्पोर्टेंट पीपल एंड विच डेफिनेशन हैज बीन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट हैज डिफाइंड अलॉटमेंट एज the appropriation out of the previously unappropriated capital of the company of a certain number of shares to the person. Now यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा it is little bit of twist, tongue twister जैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करती है कि it is an appropriation, the appropriation out of previously unappropriated capital of the company of number of shares to the company. That means they are giving प्रीवियसली अनएप्रोप्रिएटेड कैपिटल जो है कंपनी का, वो सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो दूसरे लोगों को वो दे देती है. इसका मतलब है ये. ओके, देयर इज नथिंग टू थिंक सो मच अबाउट. ओके, दे आर एप्रोप्रिएटली दे रहे हैं, जो पहले अनएप्रोप्रिएट कैपिटल था उसका जो वो शेयर कन्वर्ट करके वो लोगों को दे रहे हैं. दिस इज अ वेरी सिंपल. नाउ हियर सी, एप्रोप्रिएट मतलब व्हाट, दे रहे हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूट, राइट. अनएप्रोप्रिएट मतलब अनडिवाइडेड, होल. तो जो जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो अनएप्रोप्रिएटेड है, जो कि डिवाइड हुआ ही नहीं है, जो टुकड़ों में है ही नहीं. जब हम शेयर्स, रिमेंबर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर,
अ स्मॉल यूनिट डिविजिबल यूनिट ऑफ द शेयर कैपिटल, तो वैसे ही अनअप्रोप्रिएटेड जो कैपिटल है, ये होल कैपिटल जो है कंपनी का, वो सर्टन शेयर्स में कन्वर्ट करके हम लोगों को दे रहे हैं, उसको हम कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, नाउ thus as per this definition, allotment of share means allocating, students underline this word, allocating, that is giving certain number of shares by board of directors out of previously unallocated capital of the company to the person who have applied for their shares। बहुत ही क्लियर है ना। आप क्या कर रहे हो, अलॉटमेंट ऑफ शेयर का मतलब है यू आर गिविंग सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स by the board of directors, people who are giving, please underline that also, by board of directors out of previously unallocated capital, जो capital the capital which is undivided, जो as a whole है, तो उसको आप क्या कर रहे हो, उसको डिवाइड करके उनको दे रहे हो जिन्होंने भी अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, देन कम्स द कंपनी इश्यूज प्रोस्पेक्टस। नाउ ये एलोकेशन या अलॉटमेंट ऐसे ही नहीं उठ के किया जा सकता है ना, उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है कि वो प्रोटोकॉल क्या है, क्या करना पड़ता है एप्लीकेंट्स को, वो भी तो हमको जानना है। यहाँ तक ठीक है ना, व्हाट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड व्हाट इज द डेफिनेशन बाय सुप्रीम कोर्ट, अप्रोप्रिएट अनअप्रोप्रिएट क्या है, फिर कौन देता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देते हैं, कैसे आउट ऑफ द अनएलोकेटेड कैपिटल हु हैव अप्लाइड फॉर द शेयर्स। तो यहाँ तक आपको इन डेप्थ क्लैरिटी हो गई है अबाउट अलॉटमेंट। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी इश्यूज प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म। अगर किसी को अलॉट करना है तो पहले पूरी डिटेल्स तो लेना चाहिए ना, तो कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस देती है। जैसे कि इफ यू आर गोइंग फॉर एडमिशन, द कॉलेज गिव्स यू सम प्रोस्पेक्टस ना, तो उस प्रोस्पेक्टस में पूरा डिटेल होता है कॉलेज का, उनकी एक्टिविटीज का, सब्जेक्ट्स का, टीचर्स का, each and every minute डिटेल्स। वैसे कंपनी अपने कंपनी के डिटेल्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस, और उस प्रोस्पेक्टस में एप्लीकेशन फॉर्म भी होता है। एप्लीकेंट क्या करता है, एप्लीकेंट दैट इज ऑब्वियसली द सब्सक्राइबर्स फिल द फॉर्म एंड सबमिट्स इट विद द एप्लीकेशन मनी टू द कंपनीज बैंकर्स। तो वो पूरे डिटेल में भर देते हैं और उसको एप्लीकेशन मनी के साथ बैंकर्स को, कंपनी के बैंकर्स को सबमिट कर देते हैं। देन व्हाट हैपेंस, then the board of directors again comes into picture। okay, ये जो board of directors है, they approve the acceptance of such application in the board meeting by passing a resolution and this is called as allotment of shares। okay, orally हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब ऑन पेपर होता है तभी ही वो अप्रूव होता है। तो जिन्होंने भी एप्लीकेशन मनी के साथ फॉर्म भर के भेजा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको अप्रूव करती है, एक्सेप्ट करती है उन एप्लीकेशंस को। एक पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग में एक प्रोटोकॉल से एक रेजोल्यूशन पास होता है एंड दिस इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ओके, देन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज द पावर टू अलॉट शेयर्स। नाउ ये बात तो हमारे दिमाग में रह गई कि कौन है वो बंदा जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करता है, वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 फॉलोइंग कंपनीज हैव टू इशू सिक्योरिटीज इन अ डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म मतलब डीमैट फॉर्म, डिजिटलाइज्ड फॉर्म है ना। अब तो मैनुअल रहा नहीं, सो यहाँ पे उनको शेयर्स कैसे इशू करने हैं, सिक्योरिटीज कैसे इशू करने हैं, इन द डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म। तो उसके लिए जो जरूरत है और जो कंपनीज हैं, व्हाट आर दोज पॉइंट्स, लेट्स सी। ओके, अ कंपनी मेकिंग अ पब्लिक ऑफर इन एक्सेस ऑफ ₹10 करोड़। जो कंपनी पब्लिक ऑफर करती है वो इन एक्सेस ऑफ हाउ मच, 10 करोड़, दैट इज 1 पॉइंट। These are the companies which have to issue shares in the demat form। ये सारे conditions जो है डीमैट फॉर्म के लिए, ये सारे conditions अप्लाई होते हैं। Second, unlisted public companies for its new issues with effect from 10 September 2018। So these are the technical details which you should be understand for your knowledge also। Such other class or classes of companies as may be prescribed, जो भी prescribed हुए होते हैं वो भी ये कर सकते हैं। Okay, any other company can issue its shares in any form। Also companies have the freedom to convert its shares into dematerialized form at any point of time। now students initially तो डीमैट था नहीं, सारे लोग फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट लेकर ही रहते थे, लेकिन अब हर कोई को ये राइट है, उनको फ्रीडम है कि वो अपने जो शेयर्स है वो डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं कभी भी, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम।
Companies issuing shares in demat form or dematerialized form has to comply with the provisions of Depository Act 1996 and regulation issued thereunder. तो ये जो सारा कुछ हो रहा है that they have already mentioned any other company can issue shares in any form, ठीक है, लेकिन कंपनी को ये भी फ्रीडम है कि वो जो भी शेयर्स है वो डीमटेरियलाइज फॉर्म में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन कंपनीज इशूइंग शेयर्स इन डीमटेरियलाइज फॉर्म हैज टू कॉम्प्लाई, मतलब जो भी इशू कर रहे हैं डीमटेरियलाइज फॉर्म में दे हैव टू कम इनटू टर्म्स विद द प्रोविजंस ऑफ डिपॉजिटरीज एक्ट 96. जो भी प्रोविजंस है डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के वो उनके साथ कॉम्प्लाई करना, उनको उनके साथ कॉम्प्लाई करना ही पड़ेगा. उनसे जो उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनके ऊपर अग्री करना ही पड़ेगा, ठीक है. And obviously provisions and the regulations issued therein. So these are the things, children, you should be aware about allotment of shares. Allotment of shares is not just giving the shares to the people. It has more than that. That is what I just wanted to bring to your notice. So now anytime if anybody asks you about allotment of shares, आपको ये बताना जरूर पड़ेगा कि yes, it is giving shares to the public as they have subscribed or applied for. Who does the allocation? Definitely board of directors. Then they have to fill the form, all the procedures along with the application money, deposit the money in the banker's account, company's bankers, and then they have to pass a resolution, and this is called as allotment of shares, ठीक है. डेफिनेटली कंपनीज के एक्ट के जो कंपनीज इशू कर सकते हैं डीमैट फॉर्म में, दे हैव टू फॉलो ऑल दिस 3 conditions which I have explained to you, like company making public offer in excess of 10 crores, unlisted public companies for its new issue with effect from 10 September 2018. मतलब जो अनलिस्टेड कंपनीज है पब्लिक, वो न्यू इशू के लिए न्यू इश्यूज के लिए कब से 10 सितंबर से कर सकते हैं अंडर दिस डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म. Then other classes. So all these things are very, very necessary for you to understand allotment of shares. So in-depth explanation, I think will definitely help you to get a bit of clarity about allotment of shares, students. So I hope the concept is clear. If this video is useful to you, kindly like, subscribe and share, children. Share it, others also get the अवेयरनेस अबाउट द टॉपिक. बहुत सिंपल होते हैं, जब आप टेक्निकल टर्म के पास पढ़ते हो तो थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है. द मोर यू रीड दिस टाइप्स ऑफ कंसेप्ट्स यू विल कम टू नो बाय द एंड ऑफ द डे इट विल बी वेरी वेरी सिंपल, ठीक है. ऑन दैट अगेन गुड नोट आई विल कंक्लूड द लेक्चर हियर, चिल्ड्रन. थैंक यू सो मच. Soon we'll be coming up with the next topic, that is provisions or conditions for allotment of shares. उनमें भी कैटेगरी है स्टैट्यूटरी और एंड जनरल. सो वी विल डिस्कस, नॉट टू वरी, विल जस्ट एंजॉय ईच एंड एवरी टॉपिक, ठीक है. थैंक यू सो मच चिल्ड्रन. थैंक यू.